Good evening, my dear students. Welcome to my live session Sri Gopal Kulkarni YouTube channel. So, the continuation of chapter Control and Coordination, subject Biology, class 10. Join as early as possible. Time is 7:30 p.m. Yes. Yes, students. In the last class, we have discussed regarding plant hormones. Today, we are going to discuss about animal hormones or hormones in animals. These hormones are released by endocrine glands. Okay. So what are endocrine glands? What are these hormones? Where they are present? And what are their functions? Today we are going to study in detail, students. Okay, fine. Shall we start now? Everything is clear? Yes? Okay, fine. Yes. Hi, students. See, first of all, we have to understand what do you mean by hormones. And the last class only I have discussed it. Okay. Hormones in animals. What do you mean by hormones? So hormones are the chemical substances. What are the hormones? These are chemical substances. Yes. What they will do? They will help for the living organisms. For what purpose? For the growth purpose and also for maintaining the body. Okay, fine. So this is the function of hormones. These hormones are chemical substances. Okay. Endocrine glands. What do you mean by glands, students? Glands are the some of the specialized cells. Okay, they release some hormones, chemical substances, and these hormones are helpful for us. Okay. So endocrine glands means what? Some other glands are also there in our body, exocrine glands. Human digestive system we have studied, students. The biology first chapter, life processes. In that, the glands, salivary gland which is present in our mouth, stomach gastric glands are there, pancreas is a endocrine as well as exocrine gland, students. It is a mixed gland. See, pancreas is coming here also. In endocrine glands also it is there. In digestive system it also release some hormones, enzymes. So it is exocrine gland also. So what do you mean by endocrine glands and what do you mean by exocrine glands? Exocrine glands are duct glands, students. Ducts. Ducts means what? Pipes. They release their hormones in certain pipes. Duct glands, exocrine glands, which are present in digestive system. Exocrine glands, endocrine glands are ductless glands, students. Ductless means what? Pipe. There will be no pipe. They release their secretion. Where they release their secretion? Directly into the blood. What blood will do? Blood will transfer these hormones to directly to the target organs. Is it clear? Endocrine glands, this is not given in your book, but information purpose, knowledge purpose, I am telling you this one. Endocrine glands release their secretions. Secretions means what? Hormones. Secrete, release. These glands secrete directly into the blood. Blood, what it will do? It will carry to whole with the exactly target organ. Okay, fine. Endocrine glands, these glands secrete their products or hormones into the blood. So these not having any ducts. So it is called as, they are also called as ductless, students. Ductless glands. Is it clear? Fine. See, I have written here, these all are glands which are present in our body. First column, endocrine glands. Second column, hormones. Which gland, what hormone it will release. Okay, fine.
So where this gland is present, location, okay, and what this hormone is going to do, function. Gland, position, hormone, their function. Is it clear? Okay, let's see one by one students. Try to understand. Okay, control and coordination chapter. Thyroid gland. Thyroid gland is present in our neck or throat region. So here in this throat region, this thyroid gland is present, students. Thyroid gland, what it will do? It releases thyroxine hormone. Hormone name is thyroxine, gland name is thyroid. Thyroid gland, thyroxine hormone present in neck region, students, or throat region. So what is the function of thyroxine hormone? See, thyroid have to release thyroxine, we have to eat iodine content food. Otherwise, what happens? The disease will come that is known as goiter. Goiter means what? Swollen neck. The neck will swell, students. It will become very enlarged position here takes place. The neck will swell here because due to deficiency of thyroxine. ये थायरॉक्सिन कम होने से हमको ग्वाइटर हो सकता है. हम क्या करना चाहिए? आयोडाइज्ड साल्ट खाना चाहिए. खाने के अंदर आयोडीन कंटेंट साल्ट. आप घर के अंदर साल्ट का पैकेट देखिए या नहीं तो खरीद लीजिए दुकान के अंदर. जब भी खरीद लेते हो उसके ऊपर क्या रहना चाहिए? आयोडाइज्ड साल्ट. मीन्स व्हाट? आयोडीन कंटेंट साल्ट. आयोडीन रहना चाहिए. अगर आयोडीन नहीं रहा तो थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होता है. कौन रिलीज करता है थायरॉक्सिन को? थायरॉइड ग्लैंड. सो क्या फंक्शन क्या है? थायरॉक्सिन का काम क्या है? Regulation of metabolism of carbohydrates, fats and proteins. Regulation means what? Control. हम जो खाना खाते हैं, what the food we eat, that food contains carbohydrates, fats, proteins. ये सब हमारा बॉडी के अंदर ठीक तरीके से डाइजेशन होना चाहिए और सभी जगह पे जाना चाहिए. मेटाबॉलिज्म होना चाहिए. मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है? डाइजेशन होना है और सभी जगह पे पहुंचना है. दैट फूड हैव टू, carbohydrates, fats and proteins have to be digested well and they have to go to each and every part. That is known as metabolism. Who will control? Regulation means what? Control. Who will control the metabolism of carbohydrates, fats and proteins? Thyroxine hormone. Remember everybody, it is very very important, students. All this is very very important. Is it clear? हम क्या खाना खाते हैं? चावल खाते हैं समझो. राइस वी ईट. राइस कंटेन्स रिच अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बटर खाते हो, घी खाते हो, ऑयल खाते हो, क्या रहता है उसके अंदर? फैट्स रहता है. फैट्स. हम मूंग दाल खाते हैं, दाल खाते हैं, मिल्क पीते हैं, इसके अंदर सब क्या रहता है? प्रोटीन्स रहता है. ये सब ठीक तरीके से डाइजेशन होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर और सभी जगह पे जाना चाहिए. सो कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स by whom? Thyroxine hormone. Is it clear? Fine. The next gland is known as pituitary gland. This pituitary gland is present in midbrain. ब्रेन डायग्राम मैंने निकाला था, आपको बताया है कि मास्टर ग्लैंड है. कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड का पोजीशन क्या है? लोकेशन क्या है? मिड ब्रेन. और ये क्या रिलीज करता है? Growth hormone, students. See, we were very 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 small babies. Now we have grown up. How our body has taken place? The growth. Growth कैसा हो गया हमारा बॉडी के अंदर? ग्रोथ क्यों हो गया? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया. कौन रिलीज किया? पिट्यूटरी ग्लैंड. See, spellings are very very important. You do not have to mistake while writing spellings. P-I-T-U-I-T-A-R-Y, pituitary gland. It is called as master gland because it controls all the glands, students. That's why it is called as
master gland. Pituitary gland releases growth hormone, and pituitary gland is present in midbrain. Brain is divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. In midbrain, this pituitary gland is present. It releases growth hormone and function is regulates growth and development. Regulate मतलब क्या है, बार बार बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेस करके बोल रहा हूं. रेगुलेट मतलब कंट्रोल, कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये अगर ज्यादा रिलीज हो गया ग्रोथ हार्मोन, वो पर्सन बहुत हाइट में बढ़ जाते हैं पूरा, नॉट अब नॉर्मली अबनॉर्मल हाइट, दैट इज नोन एज गिगैंटिज्म और जिगैंटिज्म. अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं किया, दैट कंडीशन इज नोन एज ड्वार्फिज्म. ड्वार्फ मतलब क्या है, बहुत छोटे हो जाते हैं, वो हाइट ही नहीं बढ़ते. थोड़े लोगों को आप देखा है कि इतने इतने ही रहते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, उनका एज 30, 40, 50 रहता है, इतना ही रहते हैं. क्यों? ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं किया. हमारे बॉडी के हम नॉर्मल हाइटेड है, ग्रोथ हार्मोन इज करेक्टली इट इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन आवर बॉडी. Pituitary gland releases growth hormone present in midbrain region and controls growth and development. Is it clear? Are you getting, students? Sir, kindly reply. Abdul Rahman. Yes, sir. What I have to reply? Hi sir, your teaching is very well. What's your education qualification? Abdul Rahman. Yes, my qualification is MSc B.Ed, and thank you so much for your wonderful valuable comments. ओके, देखने बड़ा बताएगा. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. नाइस, थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान. ओके फाइन. आर यू गेटिंग नाउ? जस्ट नाउ वी हैव सीन थायराइड ग्लैंड, pituitary gland we have seen. Okay, two glands we have completed and their hormones and the location and the function we have seen. Okay fine. Next we are going to study about pancreas. मैंने बोला है कि आपको पैनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड में भी आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आता है. डाइजेशन के अंदर भी हेल्प करता है. पैनक्रियाटिक अमाइलेज छोड़ता है विच विल हेल्प फॉर डाइजेशन. एंड दिस पैनक्रियास इज आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट रिलीजेस इंसुलिन. इंसुलिन रिलीज करता है. सी एग्जैक्टली आई विल टेल यू. पैनक्रियास, inside the pancreas there is a one place, islets of Langerhans. क्या है? Islets of Langerhans, which is not there in your textbook, students, but I am generally telling PU level it is there. Inside the pancreas there is a islets of Langerhans that releases insulin. ये इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. ओके, इट regulates blood sugar level, reduces and controls blood sugar level. हम ज्यादा स्वीट खा लिए, if we eat more and more sweet, students, or more food we eat, our blood sugar level rises. Blood sugar level, it should be in moderate, it should be in control. If we eat more sweets, our blood sugar level will rise. So at the time pancreas releases insulin. That insulin regulates, reduces, कम, reduce मतलब क्या है? कम करना है. It will reduce the blood sugar level and controls the blood sugar level. और एक रिलीज करता है पैनक्रियास इंसुलिन के साथ, वो जो है ग्लूकेगॉन. ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं स्टूडेंट्स. एक ग्लूकेगॉन क्या करता है? What it will do? It increases the blood sugar level. When we are not eating the food, when we are not eating anything, fasting, हमारा ब्लड का लेवल, शुगर लेवल जो है पूरा कम हो जाता है. एट द टाइम ये क्या रिलीज करता है? पैनक्रियास ग्लूकेगॉन रिलीज करता है. एक ग्लूकेगॉन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है. सो किधर रहता है पैनक्रियास? बिलो द स्टमक, स्टूडेंट्स. हमारा जो जठर है, जठर के नीचे, हम बिलो अवर स्टमक द पैनक्रियास इज प्रेजेंट, स्टूडेंट्स. पैनक्रियास releases insulin. For your syllabus only the insulin they have given.
What is the function of insulin? Regulates, reduces and controls blood sugar level. Okay, clear? Fine. Now एड्रेनल ग्लैंड स्टूडेंट्स, ये एड्रेनल ग्लैंड किधर रहता है? हमारा जो किडनी रहता है ना, किडनी के ऊपर रहता है स्टूडेंट्स, ऊपर, किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर. What will be there? Adrenal gland will be present students. These adrenal gland releases adrenaline hormone. Hormone name is adrenaline. Okay, what we have to pronounce? Adrenaline. And the hormone gland is adrenal. Adrenal gland releases adrenaline hormone. This hormone is also called as emergency hormone students. Emergency में ये release होता है. हम जब भी एक कुत्ता आ गया, dog will come, it suddenly it starts attacking us, what we will do? We will run. So at the time this hormone is released. हाथ सब पसीना पसीना हो जाता है, डर लगता है, हार्ट बीट इंक्रीज होता है और ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होता है, ब्रीदिंग ज्यादा होता है. इट विल इंक्रीजेस द ब्रीदिंग रेट स्टूडेंट्स. एड्रेनालाइन हार्मोन फंक्शन इज इंक्रीजेस ब्रीदिंग, heart beat will increase, oxygen will go to our muscles will start doing the function, running. We have to protect ourselves. शेर कभी हमारे आगे आ जाता है, क्या करते हैं हम लोग? So we will protect ourselves. वो इमरजेंसी टाइम के अंदर ये हार्मोन काम करता है, इसलिए इसको एड्रेनालाइन हार्मोन को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं. हमारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ब्रीदिंग को इंक्रीज करता है, प्रोटेक्ट. ओके, इज इट क्लियर? एंड द पोजीशन इज अबव द किडनीज, अभी जो मैंने आपको बताया है पहले ही. ओके स्टूडेंट्स, दिस टेस्टिस आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स. सो बिलो द abdominal region or genital area or private part, this is present, these testes are present in pairs. They release testosterone hormones. So spellings you have to remember. Spellings are little bit difficult, but you have to remember TESTOSTERONE. Testosterone. Testosterone hormone is released by testis only in males, and this is present in genital area, and the function is changes associated with puberty. Puberty means what? Teenage. 13 to 19, teen जो है, teen age. Okay, teen age for development of what? Secondary characters. For secondary characters development or sexual maturity, so these hormones will help. Beard, mustache, okay, development of male gametes, so it will help students. Testosterone hormone present in released by testis in only in males. The next hormone is ovaries. Ovaries are present only in females, and they release the hormone estrogen students. In some textbooks they have given ESTROGEN, estrogen, but in your 10th syllabus they have given OES. So you have to follow as per your textbook class 10. Estrogen. Estrogen is a hormone released in females by ovaries. उसका क्या काम भी वही है. So it is present in same region and the same function as per male, because these are helpful for secondary growth of secondary characters. Is it clear? Fine. Now hypothalamus. What is hypothalamus? It is a gland students. कहाँ रहता है? मिड ब्रेन के अंदर. So in brain diagram, if you see some my old videos, live session before 1 day or 2 day, that in brain diagram I have mentioned the pituitary gland and hypothalamus position. Okay, so hypothalamus is present in midbrain, and they releasing hormone. What this releasing hormone will do? It stimulates
द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। आपको इजी मैं समझा देता हूं। हाइपोथैलेमस ए रिलीजिंग हार्मोन्स छोड़ता है ना, ये रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रेशर देता है। किसको देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। हार्मोन्स रिलीज करो, हार्मोन्स रिलीज करो, उसका हाइट बढ़ने का भी काम है, तुम हार्मोन रिलीज करो बोल के क्या करता है, प्रेशर देता है। स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज growth hormone, students. Okay, fine, students, are you getting this point? Okay, hormones in animals. So let's continue this topic. If pancreas stops producing insulin, what happens, students? The disease will come that is known as diabetes. डायबिटीज मतलब क्या है, डायबिटीज मतलब जो हम कॉमनली क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। शुगर आया है, इसको शुगर आया है, उसको शुगर आया है। व्हाट डू यू मीन बाय शुगर? ब्लड में है ना, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, दैट इज नोन एज डायबिटीज। इंसुलिन बंद हो जाता है, इंसुलिन विल नॉट रिलीज्ड बाय पैनक्रियास, खराब हो जाता है पैनक्रियास, उसको हम डायबिटीज कहते हैं। एक एक लोगों को क्या हो जाता है, शुगर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता है, थोड़ा भी प्रोड्यूस नहीं करता है, वो बाहर से इंजेक्शन की तरफ से इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन शॉट्स दे विल टेक, स्टूडेंट्स। सो nowadays insulin is available in markets. The patients have to, doctor will suggest as per how much they have to take. So they will go and purchase, and daily they have to take insulin food, daily one time, okay, compulsory they have to take. Few years back क्या था, कब भी फूड खाते हो जब इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता था खुद का खुद, डायबिटीज पेशेंट्स। लेकिन आज अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, सो डेली वन इंसुलिन शॉट 24 आवर्स इट विल वर्क, स्टूडेंट्स। ओके, फाइन। सो क्या हो जाता है, थायरॉक्सिन रिलीज नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, ग्वाइटर डिसीज आ जाता है, स्टूडेंट्स। ग्वाइटर, स्वोलन नेक। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया तो गिगैंटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हुआ तो ड्वार्फिज्म, पूरा हाइट विल नॉट ग्रो, स्टूडेंट्स। इफ इंसुलिन इज नॉट रिलीज्ड, diabetes. So these are the some of the what diseases will come due to the what deficiency or not releasing of hormones by this our endocrine glands. Simple है, easy है, okay. It's biology is very easy if you give little bit concentration, and it is a easy subject, students. According to me it is very easy. So once again, hormones are chemical compounds, students, chemical substances. ये हमको हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आज हम पढ़ चुके हैं, एक क्विक रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। सो यू हैव टू मेक इट रिवाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स secrete their hormones directly into the blood. They do not have any pipes, so that's why they are called as ductless glands. Ductless glands. Thyroid gland, pituitary gland, pancreas, adrenal, testes, ovaries, hypothalamus. These all are endocrine glands, students. And these are the hormones and the position and the function. Thyroid gland releases thyroxine. Thyroid gland is present in neck region. This thyroxine will help what regulation of metabolism of carbohydrates, fats and proteins. And next one is pituitary gland. It releases growth hormone present in midbrain and releases growth hormone and function is a regulation of the development or growth and development. Pancreas, it is position is below the stomach, releases insulin, regulates blood sugar level. Not only regulates, it reduces blood sugar level. Next one, adrenal glands present above the kidneys. They release adrenaline hormone. It is also called as emergency hormone, and the function of adrenaline is increasing of blood pressure,
breathing rate, heartbeat, respiration. Okay, it helps to protect ourselves from emergency. Testis releases testosterone hormone present in private area, and only in male it releases, and it helps for what development of secondary characters, changes associated with puberty, sexual maturity in males. Ovaries releases estrogen in females. Estrogen, the ovary same position as per in male. Estrogen function is the same. Changes associated with puberty, sexual maturity in females. And hypothalamus, which is present in midbrain, releases releasing hormone. This hormone will stimulate the pituitary gland to release hormones. Is it clear, students? Understood, everybody? So if thyroid gland does not secrete thyroxine, which disease will come? Goiter. Goiter is a condition of swollen neck, because thyroxine have to release what the patient have to, what we have to eat. Iodine food we have to eat. Iodine. Remember, everybody, if we not eat iodine, there may be a chance of coming goiter. So iodized food we have to eat. Iodine is present only in salt, sir? No, it is present in seafood. जो समुद्र के अंदर जो मिलते हैं एनिमल्स, क्रैब्स, प्रॉन्स, जो फिशेस, जो एनिमल्स समुद्र के अंदर मिलती है वो हम खा लिए तो उसके अंदर जो आयोडीन रहता है हम हमारा बॉडी को पहुंच देता है. जो आयोडीन क्या करता है? थायरॉक्सिन रिलीज करने के लिए हेल्प करता है. इज इट क्लियर? If insulin is not released in our body, that condition is known as diabetes, blood sugar level. इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को डाउन कर. हम जब भी खाना खाते हैं वो खाना डाइजेशन हो जाता है और ब्लड में चले जाता है. अगर खाने के अंदर ज्यादा ग्लूकोज चले गया तो ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिक राइज हो जाता है. सो इंसुलिन का काम क्या है? रिड्यूस करना है ब्लड शुगर लेवल को. सो इंसुलिन ही नहीं प्रोड्यूस हो गया तो वो जो कंडीशन है डायबिटीज. ओके स्टूडेंट्स, सो एड्रेनालाइन इज ए इमरजेंसी हार्मोन. इट प्रोटेक्ट्स अवर्स फ्रॉम इमरजेंसी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक? We have completed the topic control and coordination, class 10 students. And another thing I want to tell you, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं किया तो कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा वो जो ड्वार्फिज्म कहते हैं, हाइट ग्रो नहीं होता है. अगर ज्यादा growth hormone is released by pituitary gland, that is known as gigantism. So we are going to study in the next session about some important questions we are going to discuss, students. So you have understood all this today's topic. I think if you are having any doubts you can ask students. Okay, in the next session we are going to solve some important questions of this chapter, control and coordination, biology subject, class 10 students. Until then, take care, keep learning, keep watching. Thanks for your valuable likes. Please share to your friends. Bye bye students.